So now I'm going to describe the procedure, balloon compression of trigeminal ganglion on the skull. So I have put the needle. So we can see this is the blue color cavernous sinus because this is sella turcica. Here this is the slope, clivus. Here the posterior clinoid process, it is broken. The foramen magnum. So this is V1, the upper part of the lateral surface of the cavernous sinus. Then this is V2 going towards the foramen rotundum. Then it is V3 coming out to the foramen oval. You can see the foramen oval here corresponding. And this green color is the motor root. So this is the petrous part of the temporal bone, anterior slope, posterior slope. Here actually we will get the temporal lobe. Now at the medial part of the petrous part of the temporal bone we will get the Meckel's cave. It is seen here exactly above the foramen oval. Same thing is there. So this is the ganglion. So in the ganglion we get the pseudounipolar neurons. So this is the central process. These are all peripheral process. That's why we used to compare with the dorsal root ganglion of the spinal nerves. It is also same. It is outside the brain, inside the cranial cavity. This is the motor root. So this motor root and the central process, they will come out from the pons just little anterior to the middle cerebellar peduncle. This is foramen magnum. So now we can see the needle has come here. Now I will put the guide wire. I will take out the stellate and I will put the guide wire. Constantly I have to see in the screen, guide wire should not go beyond the petrous part of the temporal bone. You can see the position of the guide wire. It is just come out the needle tip. Now I will take out the needle and put the dilator. I will take out the needle and constantly watch in the fluoroscope so that guide wire should not go too much inside above the petrous part. The needle is out. Now I will put the dilator. Because this is blunt, so better to increase the skin entry size with a 16 gauge hypodermic needle. Now after that I am putting the dilator inside. Yeah, you can see how the dilator is come on the ganglion, and through that we can see the guide wire also. Now I will take out the guide wire. Now this is the sheath. You can see the locking system. When you keep the tip of the sheath just inside the foramen oval, then you lock it at the skin so that sheath should not go more inside. So now I will take out the stellate and put the sheath through the dilator. We can see how the sheath has gone inside the foramen oval. I will not take the sheath much inside. So this is the dilator and here is the sheath. Now I will take out the dilator. I will check whether the sheath is just inside the foramen. The sheath is just inside the foramen. Now I will put the Fogarty catheter. So I will check how much air is needed to inflate the balloon. So it is around half ml to 1 ml. That much dye is needed to inflate the balloon. Now I will deflate it and put through the sheath.
So you can see how the nerve is getting damaged in the model. Mostly the same thing happens in reality. That's why patient realizes numbness for a long time. So we can see the tip of the sheath is kept just inside the foramen oval. Now I am putting the balloon inside. I will see if I want to keep the balloon on the ganglion, I have to keep the distal and the proximal white dot on the Meckel's cave. So many times in fluoro we cannot see this distal and proximal tip of the balloon. As this is a real skull, so I can assume if I am keeping the tip of the sheath at the foramen oval, so in lateral view you will see just at the zygomatic, the needle has gone through the zygomatic, not too much above the zygomatic. So if I keep the tip of the sheath there, then the maximum power of the balloon I will get on the Meckel's cave. Otherwise, if I am taking the sheath much inside, then balloon will go quite up. So these things you have to keep it in your mind. I will take the sheath just above the foramen oval and keep the balloon on the Meckel's cave. Now I will inflate and see how it is compressing the ganglion on the Meckel's cave. So we can see how the balloon is inflated now and it is compressing the trigeminal ganglion. As it is a model, we can assume it may not be perfect as like the normal, because on lateral side of the balloon it will be the temporal lobe, and the medial side of the balloon the ganglion as well as the three divisions will be compressed at the root level. Then I will wait for 1 to 2 minutes at this inflated position, and then I will deflate it and take out both the catheter as well as the sheath together, so that there will be no chance of cutting the tip of the catheter by the tip of the sheath. Okay, so this is the needle through which this is the guide wire. And then is the dilator. And then this is the sheath. This is for locking on the screen. Check. Okay. Now let's do the and check it. This is going through this. So this is going through this. You can see half ml we will put.
So maximum half ml I will use for inflating the balloon. Putting it inside. Yeah, done. Give a shoot. Yeah. Shoot. गाइडर वहाँ भी रहना चाहिए और गाइडर should not go too much high inside. Should yeah, it's perfectly there. Now it is out. Shoot. Now मेरे को एक 16 days का डेटा चाहिए. Because the space is very less, I'm making a space. Shoot. Shoot. Yeah, you see it's gone inside. Shoot. Shoot. So this is the, so I will take out the guide wire now. Shoot it back. And now this will go quite thick. That is the main problem. Yeah. Shoot. Constantly I have to watch whether the dialect is not going too much inside. Shoot.
shoot, 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 shoot. Yes, okay. So this much I can. So that is the lock on the screen. I will take all the caliper. Shoot. Yeah. So if this, so I can calculate how much it will come. It is going more than that. Up to this level it should come maximum. Okay, so shoot. Shoot. That's this locking system, so that I can lock. Shoot. कैसे कम हो गया? ठीक है, आओ। चालू है। जितना पेन था पहले, अभी ये हमने किए है, कितना दिन हो गया करके? 7 दिन है। 7 दिन हो गया। पहले से कुछ फर्क लगता है? हाँ, फर्क है। कितना फर्क लगता है? पूरा फर्क है। पूरा फर्क लगता है। ओके, तो अभी और क्या चिंता है? अच्छा है। थोड़ा तो सुनापन रहेगा आपको। हाँ, बहुत सुनापन, वो तो रहना ही चाहिए। हाँ, पर दर्द तो कम हुआ ना पहले से? हाँ, दर्द थोड़ा कम होगा। इतना इधर सुनापन है ना, इतना इधर हमने नस को ब्लॉक किया, थोड़ा सुनापन तो होगा। हाँ। आप थोड़ा बताओ, आपका तकलीफ क्या होता है? मुझे खाने के टाइम पे, पानी पीने के टाइम पे वो
तकलीफ होता है उधर, वो बहुत तकलीफ होता है। रुकता कहाँ पर दुखता है? ओके, अभी दुखता है? ब्रश करने के टाइम पे, अच्छा, खाना, ये कितना दिन से हो रहा है प्रॉब्लम? ये 2 महीने से हुआ। ये इससे पहले भी हुआ था। ये कितना दिन से हो रहा है? बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गए। हाँ, लेकिन बीच में बंद था। अच्छा, फिर अखोमती चालू हो गया। ओके, ठीक है। अभी बताओ तुम्हारा क्या हाल था पहले और आज क्या हाल है? सर पहले मैं बात नहीं कर सकता था, खाने में तकलीफ होती थी और पीने में भी तकलीफ होती थी। रात को जब सोता था तब अगर ये साइड गलती से भी मुंडी चली जाती थी तो मुझे पेन होता था। अब तो अभी कुछ कम लगता है? सर अभी तो कम ही है दर्द, कम है? कितना टक्का कम हो गया? 80% के 80% कम हो गया। हाँ। ओके, दैट्स गुड। हाँ। अभी और क्या बोलना चाहते हो, बोलो। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा सुंद हो गया है सर। सुनापन तो रहेगा, कितने दिन रहेगा सर ये? वो देखेंगे आगे, धीरे धीरे वापस आएगा। वो नस को हमने सुन किया बोल के तो तुमको पेन कम है। हाँ, अभी दर्द भी नहीं सहनोगे, सुनापन भी नहीं सहनोगे, नहीं सर, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं सुनापन तो सही वो तो उसको एक्सेप्ट कर लो लाइफ में, सुनापन को। ये तुमको अभी- दिखने को कोई तकलीफ नहीं है, नहीं। तुमको तुम्हारा चेहरे में भी कोई ये खराब नहीं दिख रहा है। पहले जो तुम्हारा चेहरे में जो हंसी था वो तो था ही नहीं, आज तो चेंज हो गया ना पूरा। हाँ, और ये दांत ऐसा, ये मतलब दोनों ऐसे थे, हाँ, अभी वैसे नहीं है, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे, आगे पीछे हो रहे ऐसे। बट पहले से तुमको जो खुशी दिख रहा है, जो कंडीशन में आए थे तुम, हाँ वो तो है। सब कुछ तो नहीं हो सकता, भगवान तो नहीं है हम। हाँ, लेकिन ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा सर। देखेंगे आगे। हाँ, तुम्हारा जो तकलीफ था वो तो कम हो गया ना आपसे। अभी आप तो उनके वाइफ है, तो आप बताओ क्या कंडीशन था और आपका क्या लग रहा है? अभी ठीक है, आप खुश है? अभी ठीक है। हाँ, आ रहा है। But- लेकिन बहुत तकलीफ हो रहा था, देख के भी नहीं, रोना आता था। अभी थोड़ा ठीक है, अच्छा है। जो कुछ किया अच्छा किया आपने। ओके।